Hello, good evening, guys. Welcome to my latest stream. I hope you all are fine. This is Sanjay Thakurel. You know, on behalf of Unacademy, I'm here to teach you some things which you may not know, and let's just. I will try to just confirm whether my audio and video is fine, guys. If you can please confirm. uh, I'm gonna check. Hi Kushnas, hope you're doing great. uh, if you can just confirm if good evening Bashar, welcome to my stream. Guys, I'm quite excited today to show you something different. Okay, something different which I always try to show. uh, दामोदर, थैंक यू सो मच. आपका प्यार मेरे लिए सब कुछ है. Hi Zevil, hi Siddharth, Siddharth, thank you for confirming. Divyansh, hi. All perfect, great. Kushnas, thank you for confirming. Okay, hi Ishan. I think Ishan, are you from Unacademy? क्योंकि वहाँ पर भी एक ईशान है जो काफ़ी बहुत ही स्वीट है. Okay, guys, thank you for joining me today for this stream. Good evening, Siddharth. So, आज मैं सोच रहा था कि क्या करेंगे, क्योंकि गेम्स दिखाते रहते हैं हम लोग कुछ ना कुछ, और स्पीड रन करते रहते हैं, खेलते रहते हैं. फिर मुझे ध्यान में आया कि पहले तो गाइस, डू यू वांट मी टू टॉक? Are you comfortable that I should talk in Hindi or I should talk in English? Okay. Okay. Yes. Okay. Sorry, Rohan. Then maybe you should have an ID on your name. Okay. So, guys, what is good for you? I mean, should I speak in Hindi or should I speak in English? या कुछ भी चलेगा. ओके, योर मिड गेम टैक्टिक इज़ वीक. लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का स्पेसिफिक टॉपिक है हिंदी. ओके, एनी विल वर्क. ठीक है, ग्रेट. आई थिंक ओनली जिसको हिंदी में प्रॉब्लम होगी वही बोलेगा कि नहीं. बोथ आर फाइन, थैंक यू. इन एनी लैंग्वेज वी डोंट हैव एनी इशू. क्वींस गैम्बिट सिखाएंगे? श्योर. हम देख इंग्लिश, हाँ इंग्लिश तो हमेशा चलते रहती है. ओके गाइज, सो मैं ये बता रहा था कि मुझे कुछ अलग दिखाना था, क्योंकि सब काफ़ी एडुकेटर्स गेम्स दिखा रहे हैं, स्पीड रन कर रहे हैं, लेकिन ओपनिंग पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है. सो मुझे क्या करना था कि मैंने ये देखा, लोगों ने मुझे पूछा हुआ है स्ट्रीम पर, जबकि मैं कुछ गेम दिखा रहा हूँ और लोग मुझे बोलते हैं ओपनिंग दिखाइए. सो उस वक्त तो नहीं दिखा सकता था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि यार कुछ तो ओपनिंग्स का होना चाहिए. सो मैं आज आपको आपकी ओपनिंग्स, आपकी जो चॉइस है ओपनिंग्स, वो दिखाऊंगा. ओके, मैंने कुछ भी सेट नहीं किया हुआ है दिमाग में. मैंने सोचा जो आप बोलेंगे मैं वो दिखाऊंगा. स्टैफर्ड गैम्बिट भी देखेंगे. सो बैंको भी देखेंगे. जो मतलब जो आप लोग बोलेंगे हम वो देखेंगे. ठीक है, क्योंकि व्यूअर्स आर एवरीथिंग. आप लोग हैं तो हम लोग हैं, आप लोग नहीं हैं तो हम लोग तो गायब हैं. ठीक है. सो ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, एक एक करके. ओके, आई स्पीक बोथ. सो यहाँ पर देखिए, स्लोली स्लोली जाते हैं. ठीक है, विल गो स्लोली स्लोली. पहले हम लेते हैं D4. किसी ने पूछा है हाउ टू रिप्लाई D4. सिद्धार्थ ने पूछा है. D4 में देखिए मेन मूव्स है D5. ठीक है, ये है मेन मूव D5, और दूसरा है नाइट F6. दोनों का एक ही पर्पस है, टू स्टॉप माई E4. ठीक है, अदरवाइज वाइट विल हैव द कंट्रोल ऑफ द सेंटर. ठीक है ना. ओके, दिस मच वी अंडरस्टूड. सो D4 को अगर आप बोलते हो, गैम्बिट्स हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके. हम गैम्बिट्स देखेंगे अभी 1 घंटे में. क्या क्या देख सकते हैं? एक तो ओपनिंग एक बहुत बड़ा पिटारा है. पिटारा, यू नो व्हाट अ पिटारा मीन्स. इट्स लाइक अ बॉटमलेस पिट. ओके, सो मैं ओपनिंग में आई एम गोइंग इनसाइड, बट हम सिर्फ सरफेस तक, मतलब ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे. पहला 10 मूव्स देखा वो भी बहुत है. ठीक है ना. ओके गाइस, बिकॉज ओपनिंग्स के ऊपर लाखों बुक्स है.
there are lakhs of books in the openings, and they say there are more chess books than all the sports books put together. ये सच है, ठीक है, ये सच है. सो ठीक है, थोड़ा सिसिलियन हो जाए, थोड़ा क्वींस गैम्बिट हो जाए. गैम्बिट में मेरी तरफ से आई विल चूज़ द गैम्बिट इफ़ यू अलाउ मी. ठीक है, गैम्बिट्स मेरी तरफ से, ओपनिंग्स आपकी तरफ से, ठीक है ना. थोड़ी बहुत बराबरी हो जाए. हाँ, मिडवे. सो D4 को अगर ब्लैक D5 खेलता है तो देन वाइट हैज़ C4. ये सबसे पहला है क्वींस गैम्बिट. वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट, इट्स अब यहाँ पर काफ़ी चॉइसेस है ब्लैक के पास, काफ़ी चॉइसेस है ब्लैक के पास. अगर मैं इसको टर्न करता हूँ बोर्ड को, एक सेकेंड. हाँ, अगर मैं इसको बोर्ड को टर्न करता हूँ तो ब्लैक के पास काफ़ी चॉइसेस है. पहले तो सबसे मोस्ट प्लेड आउट है ये क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन. ठीक है, दिस इज़ क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन. यहाँ पर नाइट C3 आता है, नाइट F6 आता है. दिस इज़ जस्ट डेवलपिंग अ पीस इन टूवर्ड्स द सेंटर. ठीक है, ये नाइट इज डेवलपिंग टूवर्ड्स द सेंटर, कंट्रोलिंग द वाइटल स्क्वायर्स E4 and D5, and black knight is also coming out and controlling the same squares as you can see. Okay, यहाँ पर बिशप G5 आता है. ठीक है, बिशप G5 भी है और नाइट F3 भी है. काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर. सो ये हो गया नाइट F3. ठीक है, नाइट F3. इसके बाद ब्लैक कैन प्ले सो मेनी चॉइसेस आर देयर अगेन. बिशप E7 इज़ देयर, या फिर बिशप B4 भी है. ओके, दिस इज़ बिशप B4. इसको कहते हैं रेगोजिन डिफेंस. ठीक है, थैंक यू गाइस. ग्रैंड मास्टर रेपर्टोयर ओपनिंग सीरीज बुक्स गुड. यस, लेकिन मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि यू चूज़ योर ओपनिंग अकॉर्डिंग टू योर प्लेइंग स्टाइल. रिमेंबर दैट. अगर आपका प्लेइंग स्टाइल अलग है और आप ओपनिंग्स जो चूज़ कर रहे हो वो अलग है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. बाप रे, काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं. मैं समझ गया था ये टॉपिक पर बहुत सारी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक पर, ओपनिंग्स के ऊपर. और मोस्टली ओपनिंग्स पर हम लोग ने कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं है. सो वी विल सी हियर. सो ये बिशप B4 होता है. अगर नॉर्मल देखा जाए तो बिशप G5, और यहाँ पे ब्लैक कैन जस्ट सिंपली प्ले बिशप E7. इस पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. यू आर जस्ट डिफेंडिंग द नाइट. ओके, और एंड आफ्टर दिस वाइट कैन प्ले नाइट F3. हाँ, विल स्लोली कवर जितना कवर कर सकते हैं. एंड ब्लैक हियर्स बेस्ट मूव फॉर ब्लैक इज कैसलिंग. ये हो गई इक्वल. ठीक है, दिस इज़ इक्वल. यहाँ पर वाइट खेलेगा E3. ओके, टू ओपन दिस बिशप आउट. ऑलराइट, एंड ब्लैक ऑल्सो ही कैन पुट द क्वेश्चन फर्स्ट टुगेदर टू द बिशप H6. भाई करना क्या है तुमको यहाँ पे खड़ा रहकर. ठीक है, दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. और दूसरा है नाइट B7, दैट इज़ डेवलपिंग अ पीस. ओके, इन केस बिशप टेक्स नाइट आया तो मैं नाइट से मारूंगा. ठीक है, सो दैट इज़ अनदर थिंग विच कैन बी डन. सो विल जस्ट गो बैक. यहाँ पर वाइट है, ये हो गया नाइट B7. फिर बिशप कैन कम आउट D3 पर. डोंट एक्सचेंज इफ़ देर इज़ नो रीज़न टू एक्सचेंज. देखिए यहाँ पर वाइट ने एक्सचेंज नहीं किया है, न ब्लैक ने एक्सचेंज किया है. ओके, nobody is exchanging because it doesn't make any sense to exchange over here. अगर ब्लैक एक्सचेंज करता है तो ब्लैक सेंटर दे देता है. ठीक है, अगर ये ब्लैक ने अगर ले लिया तो ये वाइट के लिए अच्छा हो गया. दिस इज़ गुड फॉर वाइट. ठीक है, सो ये टेंशन रहती है सेंटर में, दैट इज़ बेटर. ओके, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए चेस, माय गॉड सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर, और मुझे सिखाना भी है. ओके, लेकिन क्वेश्चंस पहले, ऑफ कोर्स आपके क्वेश्चंस पहले, दो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. पोजिशनल रिस्पॉन्स ऐसा कुछ नहीं है शिवा कृष्णा. जैसे मैंने आपको बताया नाइट F6 है और D5 है. दीज टू आर द मेन रिस्पॉन्स टू D4 जो हम अभी देख रहे हैं. राइट,
और दिव्यांश कह रहा है सर आई ऑलवेज एक्सचेंज पीसेस वेन एवर आई फाइंड अ चांस इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग इट, कैन यू सजेस्ट समथिंग प्लीज? डू नॉट एक्सचेंज, दैट्स व्हाट आई विल से, डू नॉट एक्सचेंज विदाउट एनी रीज़न. यस, इफ देर इज़ अ रीज़न टू एक्सचेंज, अगर आप अपोनेंट को डबल पॉन दे रहे हो, अगर आपका सेंटर स्ट्रांग हो रहा है, अगर आपकी पीस एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, तो यू कैन एक्सचेंज. लेकिन अगर इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है, ना पीस एक्टिविटी हो रही है, ना स्क्वायर्स को आप ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हो, तो फिर उसमें कुछ मतलब नहीं है. सो अगर आपके एंड गेम स्ट्रांग है दिव्यांश, तो आपको जाना चाहिए ओपनिंग्स लाइक पेट्रॉफ डिफेंस. उसके अंदर देर आर मोर चांसेस ऑफ ट्रेडिंग. ठीक है, पेट्रॉफ डिफेंस में आपको दिखा सकता हूँ. सो ये ऐसे बिशप C4 है, और सॉरी दिस ब्लैक शुड नॉट प्ले, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग. एंड ब्लैक कैन प्ले हियर C6. ठीक है, ये हो गया बॉटवेनिक वेरिएशन ऑफ क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन. ऑर्थोडॉक्स वेरिएशन है ये, इसमें बॉटवेनिक वेरिएशन आ गया C6. सो ऐसा है. सो विल जस्ट गो बैक अगेन एंड विल टेक वाइट फिर से. सो ये था इन समरी D4 D5 C4 E6. हाँ, अगर यहाँ पे कोई स्लाव खेलता है, दिस इज़ नोन एज स्लाव, दिस इज़ नोन एज स्लाव डिफेंस. ठीक है, सो यहाँ पर भी सेम थिंग है. वाइट डेवलप्स, ब्लैक डेवलप्स, वाइट कैन डेवलप वन मोर नाइट हियर एंड ब्लैक कैन गो E6. ठीक है, वाइट कैन फर्स्ट, यहाँ पे वाइट के पास चॉइस है दोस्तों. ही कैन immediately take the bishop out, or he can even play E3. और आपको जान के हैरानी होगी कि E3 is more played. ओके, E3 is played more than bishop G5. वो बिशप बाद में निकाल सकते हो, इसका उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. H6 कहाँ पर H6 ना, मुझे थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा, क्योंकि जब वो H6 बिशप G5 के टाइम, जब मैंने पूछा कि H6, तब उस वक्त बिशप हैज़ टू गो बैक ऑन H4. ठीक है, बिशप शुड गो बैक ऑन H4 व्हेन H6 वाज प्लेड अर्लियर. या सो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए कुणाल, द थिंग इज़ आपको रोज़ गेम खेलना है, उसकी एनालाइज करनी है. अगर आप जीतते हो तो भी एनालाइज करना है, हारना है तो भी एनालाइज करना है. आपको पजल सॉल्व करने हैं. यू कैन वॉच वीडियोस. अब हम ग्राफी पर आने वाले हैं, ग्राफी पर हम वीडियोस बना रहे हैं. हम सबकी वीडियोस आने वाली है ग्राफी पर, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. ग्राफी इज़ एन ऐप, इन केस गाइस यू डोंट नो. सो वी आर शिफ्टिंग, ऑल ऑफ अस आर शिफ्टिंग फ्रॉम अनअकैडमी टू ग्राफी. आप प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कर दीजिएगा, और हम वहाँ पर वीडियो बनाने वाले हैं. सो हर एक कोच अपने वीडियोस बनाएगा. सो यू कैन वॉच देम ऑल्सो, दे विल बी वेरी वेरी इंफॉर्मेशनल, आई अश्योर यू दैट. ओके, सो बिशप G5 यहाँ पे खेला जा सकता है, या E3, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन प्ले. E3 को नाइट BD7 है. फिर इसके बाद यहाँ पर वाइट कैन डेवलप दिस ऑल्सो, BD3, क्वीन C2 भी खेल सकते हैं. ओके, वी कैन प्ले दैट ऑल्सो. सम इवन प्ले BE2, लेकिन ये BE2 थोड़ा पैसिव है. ओके गाइस, BE2 थोड़ा पैसिव है. बीइंग वाइट यू शुड नॉट प्ले लाइक दिस. ठीक है, सो आप थोड़ा एक्टिव खेल सकते हो. बिशप D3 इज़ अ मोर एक्टिव मूव. हाँ, और बिशप D3 से भी ज़्यादा कॉमन है क्वीन C2. यहाँ पे बिशप अभी तक डेवलप नहीं किया है, बिकॉज वाइट इज़ वेटिंग फॉर ब्लैक टू कैप्चर. In case black captures, white is not going to come, white is not going to come D3 and then here, but black भी smart है, black will not capture here. Okay, okay, I don't, हरी कुमारी कह रहा है सर, I don't at all exchange pieces, my end game is weak and opening and good book, my rating is 1000. So ठीक है guys, just keep practicing and I promise you your rating will improve. सो हम ये ज़रा जल्दी देख लें ओपनिंग, और उसके बाद गैम्बिट भी करना है. काफ़ी कुछ है सिखाने के लिए, इसलिए मैंने ये पार्ट 1 रखा हुआ है. होपफुली यू लाइक दिस स्ट्रीम, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ लाइक माई स्ट्रीम. इफ़ यू लाइक दिस, तो तभी मैं आ जाऊँगा सेकेंड पार्ट लेकर, नहीं तो मेरे लिए मुश्किल होगी. ठीक है, सो आप प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे स्ट्रीम को, और मैं आपको जो ओपनिंग आप बोलेंगे मैं बताऊँगा. ओके, दैट्स अ प्रॉमिस. वट एवर ओपनिंग यू वॉन्ट आई विल टेल यू, वट एवर गैम्बिट यू वॉन्ट I will show you, but आप
स्ट्रीम को लाइक कीजिए नंबर 1, और मेरे साथ जुड़े रहिए फॉर पार्ट 1, पार्ट 2 एंड मे बी वन पार्ट 3, ठीक है। सो BD6 यहाँ पर इज़ द मेन मूव, यहाँ पे BD6 आता है, और उसके बाद जब BD3 आता है यहाँ पे ब्लैक माइट कैप्चर, इट्स नॉट दैट ही हैज़ टू कैप्चर। तो यहाँ पे द बेस्ट BD6 वॉज जस्ट अ डेवलपिंग मूव एंड BD3 इज़ ऑल्सो जस्ट अ डेवलपिंग मूव, ठीक है बसंता। यहाँ पे ये देखिए, दिस इज़ नोन एज द बैटरी चेस लैंग्वेज में, ठीक है। सो BD3 करूँगा मैं कवर अवधूत, जितना हो सकता है मैं मेन ओपनिंग्स कवर करूँगा। शायद मुझे फिर आज गैम्बिट सिखाने का मौका नहीं मिले, क्योंकि इतना वास्ट सब्जेक्ट है, ओपनिंग्स एंड गैम्बिट्स इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि कोई हाथ ही नहीं लगा था। ओके, नोबडी टचेस दिस टॉपिक। सो यहाँ पे आपने देखा ये बैटरी है। सो ब्लैक के लिए कैसलिंग इन दिस पोजिशन, ब्लैक कैन कैसल, हाँ। सो नाइट इज़ देयर टू डिफेंड द पॉन ऑन H7, बट यहाँ पर ब्लैक कुड हैव ऑल्सो प्लेड पॉन टेक्स पॉन, और उसके बाद बिशप टेक्स पॉन है एंड B5 आता है, ठीक है। दिस इज़ सेमी स्लाव जो हो गया C6 के बाद, ये सेमी स्लाव हो गया, और इसके बाद वाइट कैन सिंपली गो बैक टू D3, ऑलराइट, एंड द गेम विल कंटिन्यू लाइक से ब्लैक कैन कैसल, या फिर ब्लैक कैन ऑल्सो प्ले BB7, ये भी एक है, ठीक है। ओके, शिवा कृष्णा बहुत सारे गैम्बिट्स बोले जा रहे हैं, बहुत सारे ओपनिंग्स बोल रही जा रही है। हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है, 1 घंटे में हम जितना कर सकते हैं हम करेंगे, आई प्रॉमिस यू दैट। सो ये था क्वींस गैम्बिट इन अ नट शेल। आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं प्लीज़, ये मैंने आपको दिखा दिया है 9-10 मूव का। यहाँ पर वाइट कैसल करता है ऑन द 10th मूव, ठीक है, एंड ब्लैक ऑल्सो कैसल्स। ये है इक्वालिटी। There is no specific advantage, as they say. There is no clear advantage to either side, ठीक है। So let's go on to the next. अब हम देखेंगे guys, इसके बाद आपको क्या देखना है। हम जो पहले बोला गया था एग्रेसिव ओपनिंग, ये सब एग्रेसिव ही है। E4 D4 नाइट F3 C4, ये चार ओपनिंग्स, मेन 4 ओपनिंग्स होते हैं, E4 D4 नाइट F3 और C4, ठीक है। ये 4 श्योर वेलकम शिवा, ये 4 मेन ओपनिंग्स है। आपको डिसाइड करना है आपको कैसे खेलना है, लेकिन शुरुआत में लेट मी टेल यू गाइस, इन द बिगिनिंग आई वुड लाइक यू गाइस टू प्ले E4, ठीक है। अगर आपकी रेटिंग कुछ 1400-1500 तक है, ऑनलाइन रेटिंग मैं मतलब है कहने का, नॉट FIDE रेटिंग। अगर आपका FIDE रेटिंग ऑनलाइन रेटिंग है 1400, 1500, 1300, सो बिलो 1500 जो भी है, आप लोग E4 पे ध्यान ज़्यादा दीजिए। उसके बाद यू ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर ओपनिंग्स, यू कैन गो फॉर D4, उसके बाद E4 के बाद यू कैन ट्राई टू लर्न D4, knight F3, C4 and so on. How to know which is a good move when positions are equal? वो आपको कैंडिडेट मूव्स ढूंढने पड़ते हैं। कोई भी पोजीशन में 3 से 4 कैंडिडेट्स मूव होते हैं मोस्टली, नॉर्मली, कभी कभी कम भी होते हैं, यू नो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट ओपनिंग्स, what is the position, it all depends on that. सो वो 3-4 कैंडिडेट मूव्स में से आपको जो अच्छा लगता है, जिसकी कंटिन्यूएशन आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज वी हैव टू थिंक फ्रॉम वाइट एंड ब्लैक, डोंट फॉरगेट दैट गाइस। ओके, एक सेकेंड, someone is abusing, so I will take care of that. Okay, guys, I don't like anybody abusing over here in my channel. Okay, यहाँ पे कोई बंदिश नहीं है, जिसको पसंद है स्ट्रीम के लिए आएगा, जिसको नहीं पसंद है नहीं आए, बट ये लाइव क्लास है, यहाँ पे कोई भी अब्यूज़ करेगा वो आई विल नॉट टॉलरेट। पुष्पा जी, यहाँ पे एवरीवन एक्चुअली आप कह रहे हो प्लीज़ मोर ऑफ इंग्लिश,
बट काफ़ी लोग हैं जो देर आर मैनी पीपल हु आर लेस कन्वर्जेंट इन इंग्लिश एंड दे वांट मोर ऑफ हिंदी, सो आई एम ट्राइंग टू डू बैलेंस ऑफ बोथ. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. सो लेट्स गो यहाँ पर. सो अभी सबसे मोस्ट प्लेड आउट ओपनिंग है, सबसे मोस्ट प्लेड आउट ओपनिंग इज़ जोको पियानो. ओके, this is the most played out opening, लेकिन it's also the most mispronounced opening. A lot of people call it Gaiko piano. It's Gioco piano. Okay, also it's also known as Italian game. All right, Italian game. And so Italian Gioco piano का मतलब है क्वाइट गेम, लेकिन ये क्वाइट बिल्कुल नहीं है, कहीं कहीं से भी ये क्वाइट नहीं है. ठीक है. सो यहाँ पे वाइट मोस्टली हियर वाइट प्लेस c3. वाइट कैन ऑल्सो डू कैसलिंग इफ यू वांट्स. c3, knight f6, एंड वाइट कैन प्ले हियर सिंस अ नाइट इज अटैकिंग द पॉन, वाइट कैन प्ले d3. इफ़ यू प्लेस d4 तो काफ़ी सारे चीज़ें स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर आना, ट्रैप्स आना स्टार्ट हो जाते हैं. गैम्बिट्स है ex d4 और cx d4, दिस इज़ द थिंग. और यहाँ पे बिशप b4 चेक है. So यहाँ पे what do you think is the best move, guys? What do you think is the best move in Gioco piano? What do you think is the best move? I'll give you three choices: knight c3, bd2, knight bd2. इन तीनों में से आपको चूज़ करना है, क्योंकि किंग f1 तो वेरी बैड मूव, किंग f1. So you know, only a donut will play such a move. So yes, यहाँ पे अभी तक ये गैम्बिट आया नहीं है, अभी तक ये गैम्बिट आया नहीं है. राय लोपेज और जोको पियानो. संदीप, इट विल ऑल डिपेंड ऑन योर स्टाइल ऑफ प्ले. अगर आपको पोजिशनल खेलना है, इफ़ यू वांट टू प्ले पोजिशनल गेम, सो यू हैव टू गो फॉर राय लोपेज. This is Gioco piano, madam. This spelling is not correct. The right spelling is Giuoco piano. Okay, Giuoco piano. You can Google it also. There is a lot of stuff, lot of games, lot of traps in this opening. Okay, so यहाँ पे मेरा सवाल था कि what is the most played, what is the best move over here? Well, the best move is bd2. Okay, अगर if you guys are playing knight c3, so then you are giving this pawn. ठीक है, you are giving this pawn, knight x e4. और यहाँ पे white can do castling and he's tempting you to take even this pawn. ठीक है, but ये pawn अगर आपने black ने, now I'll just flip the board for you guys for your benefit. If you take this pawn with the knight, you will fall in the trap. ओके गाइस, ये नाइट c3 नेम हमको नहीं लेना है. अगर हम ब्लैक हैं, अगर हम ब्लैक है तो हमको नाइट टेक्स नाइट नहीं करना है. ओके, अगर आप लोगों ने नाइट टेक्स नाइट किया तो देयर विल बी पॉन टेक्स और ये हो जाएगा ग्रेकोस अटैक. ठीक है, जो गैम्बिट आप लोग बोल रहे थे ये हो गया ग्रेकोस अटैक, क्योंकि यहाँ पे बिशप टेक्स पॉन और फिर यहाँ पे best move for white is bishop a3. He's stopping the castling and he's giving the rook also. जो लोग ने ये ट्रैप नहीं देखा है, मैं जल्द से दिखा देता हूँ ये ट्रैप. बिशप टेक्स रुक और यहाँ पे एज वाइट शुड नॉट टेक इट. ठीक है, अब ये एक्चुअली मैंने फिर से साइड चेंज कर दिया है बिकॉज आई एम वाइट, वी आर वाइट नाउ. सो ये देखिए, ये है ट्रैप, फिर से मैं दिखा रहा हूँ. अगर यहाँ पे ये पोजीशन में नाइट से लिया गया है, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग. इफ ब्लैक टेक्स इट विद द नाइट, देन वाइट विल डू दिस एंड दिस, and you can see here black cannot do castling. That is the main objective of this move, to stop castling. ओके, और ये रुक भी दे रहे हैं हम. अगर ब्लैक ने ये रुक दे दिया तो उसके बाद गेम इज़ ओवर बिकॉज ऑफ रुकी 1. रुकी 1 में आप देख सकते हो क्या हो रहा है. नाइट e7 इज कमिंग एंड बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट मूव, देयर इज नथिंग एल्स. द क्वीन विल डाई इफ द क्वीन कम्स इन बिटवीन. सो नाइट e7 और उसके बाद रुक टेक्स भी है और हमारे पास बिशप टेक्स भी है. आई लाइक बिशप टेक्स पर्सनली, क्योंकि इसके
सॉरी, मेरा मतलब था आई लाइक रुक टेक्स, क्योंकि इसमें क्या होता है कि चेकमेट भी हो सकता है. किंग F8, किंग F8 एंड इसके बाद में देयर कम्स ये डबल चेक, एंड इफ किंग G8 देन रुक F8. दिस इज़ अ मेट. ठीक है, दिस इज़ अ चेकमेट. और BD2 में हम पॉन नहीं दे रहे हैं. वी विल कम टू दैट, संदीप, वी विल कम टू दैट. BD2 में हम पॉन नहीं दे रहे हैं. प्लीज़ लाइक द स्ट्रीम गाइज. आई होप यू आर एंजॉइंग द स्ट्रीम. वी आर सीइंग सम ऑफ द मेन ओपनिंग्स जो हमेशा आपके सामने आएंगी. ओके, टूर्नामेंट्स में आएंगी, फ्रेंडली गेम्स में आएंगी, लेकिन ज़रूर आएंगी. ठीक है, सो यहाँ पे रुक E7 एंड इसके बाद रुक किंग. अगर किंग E8 जाता है, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो यू हियर. वन मोर वेरिएशन. अगर किंग E8 जाता है तो क्वीन E2 चेक, या क्वीन E1 भी चलेगा. दैट्स जस्ट फाइन, एंड दिस विल लीड टू अ चेकमेट, जिसको मैं चिकन मीट भी कहता हूँ. ओके, सो ये हो गया है चिकन मीट फॉर ब्लैक किंग. सो हम पीछे जाएंगे. सो ये सब, हाँ, यहाँ पर नाइट टेक्स नाइट नहीं लेना चाहिए. अब फिर से हम ब्लैक साइड से देखेंगे. ये काफ़ी यू नो. सो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन मूव है नॉट टू किल विद द नाइट. दिस विल प्रूव टू बी अ मिस्टेक. सो व्हाट यू शुड, राघव प्लीज़ डोंट स्पैम. Raghav, please don't spam. You are not the only one who's waiting. Yes, I'm trying to cover everything. I will show you London system, but please do not spam. Thank you. So here the best move is bishop takes knight. That is the best move. And then here if white is taking this, and I will not castle over here. Castling will be a mistake for me over here. First I will play D5. Oh, also one more thing. If I play a move like this, knight takes pawn, that's a very bad move, because queen E1 check and my knight is gone. Okay guys, there are traps and pitfalls. Okay, so we have to be very careful about these kind of things happening. हृदय, I will show you. BD2 हम नहीं दे रहे हैं. BD2 I will show it to you. हृदय, do not repeat, I will show it to you. I told you. So queen E1 and इस पर the knight is gone. So what is the right move? The right move is D5. That is the right move. Okay, and here for white, white can play here say bishop A3 also. White can play bishop A3. Black will go bishop E6. यहाँ पे taking this is not a good move. ठीक है, if you take this bishop, rook E1 आ जाता है, and there is a problem now. Okay, there are a lot of problems happening here. So rook E1 and you know, the position will be I'm now showing Deepak, I'm showing now from black side what to play. That's why I have turned the board. जिस side से मैं board turn कर रहा हूँ उस side से. So ये position में D5, usually white goes BD3 and black can castle. And if you see now, black is one pawn up. Okay guys, this is what I wanted to show you. So आप ये दोबारा भी देखना video, so you will understand. Okay guys, so this is done. Now coming back to the position with BD2 यहाँ पे BD2 में we don't lose the pawn. This pawn, if you're talking about black taking this pawn, well then you guys have bishop takes bishop, knight takes bishop, and now comes a fantastic move, this bishop takes F7. That is a great move, and we get back the pawn with advantage. Why? Well, because king F7, and now here we have queen B3 attacking the king and this knight. Okay, so his castling is gone. Also after D5 हमको इसको तुरंत नहीं मारना है. Yeah,
इसको तुरंत नहीं मारना है, वी शुड नॉट, बिकॉज ऑफ नाइट E5. नाइट E5 हम चेक दे सकते हैं, सो वी आर गिविंग ए मोर एंड मोर ट्रबल, राइट. एंड आफ्टर दिस इफ किंग E7 then you can take it with the queen takes knight and it's a check. Okay, right हृदय, you understood why हमारा pawn नहीं जाता है. काफ़ी डीप है, काफ़ी डीप है. चेस इज़ वेरी डीप. So this is the position and like I showed you, this knight cannot take the pawn. So यहाँ पर what will black play? Black will do bishop takes d2, knight takes d2, और this is black को, लेकिन एक मूव अभी खेलना बाकी है black को equality के लिए. यहाँ पे it's a very important move for black to play equality. d5 equalizes for black, so pawn takes pawn and knight takes pawn, and here queen b3 is generally what is played and black plays knight c e7. and you can see ये जो बैटरी है और जो अटैक आया है नाइट पे, there are two defenders defending this knight, and now white will just castle in this position and black will also castle. ये हो गया आपके 11 moves and everything is equal. Yes, it's very deep and इसीलिए मुझे भी चेस पसंद है. There are a lot of secrets and mysteries and it's a very puzzling game of course. So now आप लोग क्या देखना पसंद करेंगे? मैं सोच रहा था अभी एक गैम्बिट दिखा दूँ. Guys, would you be interested in Ivan's gambit? Are you guys interested in Ivan's gambit? I would like to show you now a gambit. I thought I will make a mixture of openings and gambits, लेकिन काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं openings के ऊपर, which अगर मैं अभी कवर करता हूँ तो फिर मैं गैम्बिट नहीं दिखा पाऊँगा. सो आप लोगों की मर्ज़ी, आपको चाहिए गैम्बिट मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में दिखाऊँ तो मैं गैम्बिट आपको नेक्स्ट स्ट्रीम में दिखाऊँगा. ओके. See, Joko Piano opening favors white or black. It all depends how you play. It can be equal also. ये मुझसे सवाल काफ़ी लोग पूछते हैं, सर इंग्लिश ओपनिंग वाइट के लिए अच्छा है कि ब्लैक के लिए? सर क्वींस गैम्बिट वाइट के लिए अच्छा है कि ब्लैक के लिए? ऐसा नहीं होता दोस्तों. जो आप चीज़ बरोबर से खेलोगे, अच्छा खेलोगे, वो आपके लिए बेहतर होगा. इट्स लाइक ये एग्ज़ाम टफ़ है कि ईजी है. अगर आपने पढ़ाई की है तो ईजी है, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो टफ़ है. ऐसा है. ओके, सो आप लोगों को देखना है. टुडे आई हैव गॉट 1 or 2 गेम्स ऑन इवान्स गैम्बिट. सो सबसे पहले हम इवान्स गैम्बिट के बारे में ज़रा देखते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग ओपनिंग है एंड इट हैज़ बिन प्लेड ऑन द हाई लेवल. ओके, it has been played on the highest level, I would say. Gary Kasparov has played with Vishwanathan Anand. Bobby Fischer has played with Ruben Fine. So which opening is best for attacking? Well, I like Joko Piano. Definitely it's one of the favorites. And opening again, it all depends on how you prepare about it. Okay, D4 थोड़ा slow है E4 से, याद रखिएगा आप लोग. Okay, so अब ये देखिए, Ivan's gambit is very attacking. Siddharth, you can think about this, using this, all of you guys, not just Siddharth. E4, E5, knight F3, knight C6, BC4, BC5. Now this is Joko Piano, what we saw, and here comes presenting to you guys Ivan's gambit. इसकी हिस्ट्री ये है कि कैप्टन इवांस काफ़ी बहुत सारे सेंचुरीज़ पहले, यार मुझे याद भी नहीं है, 11th सेंचुरी या 14th सेंचुरी ऐसे कुछ एक बंदा हुआ करता था कैप्टन इवांस. ही स्टार्टेड प्लेइंग दिस. ओके, सो ही प्लेड दिस एंड उसकी वजह से नाम है इवांस गैम्बिट. ओके, अभी हृदय राइट नाउ प्लीज़ कैन यू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग. ठीक है, अब जब हम मसाला डोसा खा रहे तो हम उत्तपा के बारे में बात नहीं करेंगे. ठीक है. ओके, सो B4 यहाँ पे B4 is accepting the gambit, and the main thing is
main thing is you should always try to accept the gambit. Most of the gambits, the best thing is to accept them. Except queen's gambit, जो हम mostly decline करते हैं. Queen's gambit we mostly decline. Other gambits are usually accepted. Okay. So yes, sure, किंग्स गैम्बिट के बारे में भी बात करेंगे डेफिनेटली. सो मैं फिर गेम्स आपको नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगा अगर आपको गैम्बिट्स देखने हैं. सो बट आई वांटेड टू शो यू अ गेम ऑफ गैरी कैस्परो वर्सेस आनंद और बॉबी फिशर वर्सेस रूबिन फाइन. मुझे आपको दोनों में से एक गेम दिखानी थी बट हमारे पास वक्त वी हैव लेस देन हाफ एन आवर राइट नाउ गाइज. सो यू डिसाइड. It's all up to you guys. I'm here to make this stream interesting, and whatever you guys say, it'll be according to what you desire. Okay, this stream is made to order. Okay, so यहाँ पर the thing is white plays c3 gambit, and black has main choices. Black has is bishop a5. अब ये याद रखिएगा. अच्छा, ये पॉन क्यों दे रहा है बंदा? वाई इज़ वाइट गिविंग द पॉन? वेल, टू गेट एन इनिशिएटिव, बिकॉज आफ्टर दिस देर इज एन अटैक. ओके, एंड it will be to get an attack. Okay, to generate an attack. So now here black has lot of not lot, I would say four main choices for this bishop to move. One is bishop a5, one is bishop c5, one is bishop e7, and one is bishop even on d6. These are the four moves, guys. सबसे ज़्यादा खेला गया मूव है excuse me सबसे ज़्यादा खेला गया मूव है bishop a5, and second most played move is bishop e7. ठीक है. थर्ड मोस्ट played move is bishop c5, और सबसे कम खेला गया मूव है bishop d6. श्योर आप लोगों को कैस्परो वर्सेस आनंद देखना है, मैं वो दिखा देता हूँ आज. बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम थी. और दूसरी एक गेम भी है मेरे पास, बॉबी फिशर वर्सेस रूबिन फाइन, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी. ओके, सो यहाँ पर यूजुअली ब्लैक प्लेस बिशप a5. सो आई विल जस्ट शो यू वाइट wherever black plays the bishop c5, a5, d6, e7 on any of these, either of these four squares, white plays d4. Okay, and after black kills this, and white can't even take this, and white has given 2 pawns, right? White has given 2 pawns for nothing. It looks like white has gone crazy, but no, white has a plan. White will castle, and here in this position, suppose black becomes very greedy and takes even the third pawn, then definitely he's going to come in trouble. Excuse me. Queen b3, and this you can see here, this is the battery attacking the f7. F7 is the most weakest, I mean excuse me guys. Excuse me guys. So f7 is the weakest pawn, right? F7 is the weakest pawn. So we are gonna black has to defend that. So black will go something like queen f6 or queen e7. Okay, and but white has a great move, something like e5. Okay, offering one more. अगर black ने ये भी ले लिया तो फिर तो the game is almost over. You can see here what is coming. Bishop takes f7, and this position is really bad for black. Okay, going back. Now, are you guys ready to see the game? Are you guys ready to see the game? Tell me that. Okay, OP से मुझे याद आया कि OP हम ओपनिंग के लिए भी बोल सकते हैं ना, OP. Just one of my silly jokes, guys. So let's see now. हम गेम देखें right now. Should we see the game? Are you guys ready to see the game of Ivan's Gambit between Gary Kasparov and Vishwanathan Anand? ठीक है? All right, guys.
लेट्स सी द गेम, क्योंकि ज़्यादा ओपनिंग भी दिखाओ तो आदमी बोर हो जाता है, ठीक है। ओपनिंग्स हमने कर लिया, अब थोड़ा गेम भी देखते हैं। प्रीवियस पोजीशन, हृदय कौन सा प्रीवियस पोजीशन? ये पोजीशन काफ़ी सारा कुछ है देखने लायक, सो लेट्स जस्ट गो गाइस टू द थिंग। सो हम अभी जाते हैं ऑन अ गेम, ठीक है। मैं गेम दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये है गेम बिटवीन गैरी कैस्परोव एंड विश्वनाथन आनंद, ठीक है गाइस। ओके, सो एक सेकेंड, just 1 second guys. एक सेकेंड, मैं ये थोड़ा need the adjustment. Bishop is giving a check, Hriday. I will you know guys, I'll have to do it again. मुझे थोड़ा फिर से मैं करूँगा इसके बारे में। ओके, थोड़ा मैं ये एडजस्ट कर रहा हूँ बोर्ड, और लेट्स जस्ट सी दिस। e4 e5, वाइट इज़ गैरी कैस्परोव एंड ब्लैक इज़ विश्वनाथन आनंद, ठीक है। रेडी, नाइट f3, नाइट c6, bc4, bc5। सो ये है जोको पियानो, राइट, जो हमने देखी। और इसके बाद आ रहा है b4, दिस इज द इवांस गैम्बिट। नाउ गैरी कैस्परोव इज प्लेइंग इवांस गैम्बिट विद विश्वनाथन आनंद। Which year? This is 1995. Okay, it happened in a proper tournament, Riga Tal Memorial. Okay, Riga Tal Memorial is the tournament, and okay, so thank you Damodar. You have to change your name to yours. That's your dad's ID, right? So change it. So b4, bx b4 and c3, and here Anand played bishop e7, ठीक है। Anand has played bishop e7. He went for this. This is also perfectly fine. This move is also perfectly fine. There's nothing wrong in this move. लेकिन just see now how Garry Kasparov generates the attack. d4 is the best move here, guys. d4 is the best move, opening the white square, dark square bishop. So I'm talking about this one, this bishop, opening that. Knight a5. Now immediately the knight attacks the bishop, and that's what Anand did here. He's attacking, and white played bishop to e2. Okay, white is playing bishop to e2, and in this position black plays Anand played here pawn captures pawn. ये Danish नहीं है. this is Ivan's gambit. Danish is something else. So यहाँ पर white ने white can play even pawn takes pawn and queen takes pawn. both are there here, but white played Gary played queen takes pawn. Yeah, I should be taking their names, so that'll make it more familiar for you guys what is happening. So queen over here, now she's attacking this pawn on g7. So black, that is Anand played knight f6. And what is the best move here for white, guys? Can you tell me what is the best move for white? अगर white कोई और move खेलता है तो वो माइनस में जाता है, लेकिन white has the best move over here. So what is the best move for white in such a position? I will wait for you guys to answer. What is the best move for white? White has given the pawn over here, the gambit. That's right, Ishan. That's correct. Shiva is also right. Vishal is also right. E5 is the move. You're taking advantage. Pushpa is also right. Deepak is also right. Deepak wrong है. Deepak ने bishop g5 कहा है. Bishop g5 में मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ.
बिशप g5 में एक प्रॉब्लम ये है कि ब्लैक कैन सिंपली कैसल ओवर हियर, ओके, एंड देयर इज़ नथिंग नाउ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लैक को, ब्लैक इज़ एबल टू कैसल. सो हमको ये देखना है कि ब्लैक इज़ रेडी टू कैसल हियर, हम इसको कैसे इसको रोकें, ठीक है. और गैरी कैस्परोव ने रोका, गैरी कैस्परोव ने डेफिनेटली रोका. सो एच के पुष्पा दीपक सिद्धार्थ ने e5 बोला, एच के पटेल बिशप g5, सिर्फ g5 लिख रहे हैं एच के पटेल, तो मुझे नहीं पता g5 पे क्या, क्योंकि बिशप भी आ सकता है, नाइट भी आ सकता है, आप सिर्फ g5 लिखोगे तो. और आकाश ने राइट बोला है e5, ओके. सो यहाँ पर दिस राइट, अक्षय प्रभु ने भी राइट बोला है e5, okay. So e5 is what happened in the game. Now black came out with a interesting move. Black played first, black का knight तो अटैक है, लेकिन black played first knight c6 attacking the queen. So of course when the queen is attacked, ये obvious है कि मैं इसको Gary Kasparov cannot kill the knight, that is obvious. So now white has to make a move, queen move, of course. What can white play over here? What should white play over here? Queen का move करना है हमको. What do you think is the best move over here? Actually there are two good moves. आप मुझे दोनों में से कोई एक मूव भी बताएंगे चलेगा, लेकिन कोई भी दो मूव के अलावा किसी तीसरा मूव बताते हो तो वो गलत जाएगा. It will be wrong. Excuse me. That move will be wrong because that will be an inferior move. Any other move if you show me besides the two moves which are correct, it will be wrong. So Akhil is saying queen f4, Pushpa is saying queen f4, Ishan is saying queen c4, Vishal is saying queen c4, दो typo है. Suchir is saying queen c4, Vishal is queen c4, हाँ. सो एच के पटेल इज सेइंग क्वीन c4. आप लोगों को जान के ये सरप्राइज होगा कि क्वीन c4 इज़ अ बैड मूव बिकॉज ब्लैक हैज़ d5, ओके. ब्लैक हैज़ d5 एंड d5 इज़ अ गुड मूव. ब्लैक को फ्री में एक मूव मिल गया, यू नो. फ्री में कैसे? क्योंकि हम क्वीन को अटैक कर रहे हैं, तो फ्री हो गया ना ब्लैक के लिए, क्योंकि हमको अभी क्वीन को मूव करना है. और अगर हमने ये किया व्हाट इज़ नोन एज en passant, so black will simply just take this and this is better for black. This position is better for black undoubtedly, okay. So हम ये पीछे जाएंगे. क्वीन c4 रॉन्ग है, क्वीन c4 रॉन्ग है. हम दूसरा आंसर देखते हैं. क्वीन f4, क्वीन f4 इज़ वन ऑफ द राइट मूव्स. लेकिन गैरी कैस्परोव, हमारे लिविंग लेजेंड, one of my favorites definitely, he played queen h4. He's not worried about this discovered attack, guys. I know what you're thinking. ये discovered attack आ रहा है, ये knight can move anywhere, knight can go crazy, है ना. The knight can just go crazy and the bishop will be attacking the queen. लेकिन नहीं, queen d1 is wrong, Siddharth. Queen d1 is wrong. So queen h4 is the right move. क्वीन d1 में प्रॉब्लम है कि ही विल जस्ट प्ले नाइट g4 खेल सकता है. येस, नाइट g4 अटैकिंग दिस, सॉरी, नाइट g4 इज अटैकिंग दिस पॉन. सो इट विल बी जस्ट वेस्ट ऑफ द क्वीन गोइंग बैक एंड दैट पॉन विल बी. सो यहाँ पे क्वीन h4 खेला गया था बाय गैरी कैस्परोव. ऑलराइट, सो इन दिस पोजिशन black played knight d5. All right, knight d5 and the discovered attack has come, but white played Gary Kasparov played over here g3, queen g3, and he's attacking this g7 pawn. Now there's a problem with black. The problem is black cannot do castling. You understood, guys? So that's why you got to give problems to your opponent so he doesn't castle easily, you know. Like before earlier, you guys said in this position, you guys said queen c4. So queen c4 को d5 आ रहा था, and if you know, if queen d1, then it's just castling is happening. Sorry, queen d1 in this knight g4 is what I showed you, right? And if
So this is the position, and queen h4 happened, and then knight d5. Okay guys, let's move on. g7. Yes, why can't he castle? I'll show you. I'll tell you that, Akhil, why can't he castle? The thing is, if black castles now, there will be an attack generating. For example, bishop h6. Okay? So Anand was worried about that. Definitely, Anand was worried about bishop h6. Or यहाँ पे black has only one move, which is g6 to save. And Gary Kasparov, you know, he's such a strong player, and if he gets the rook in the opening itself, you know, on the 12th move itself, if he gets this thing exchange, then definitely this is trouble, right? On the 12th move itself. Yes. So yes, Kostab, you're late. Okay, no problem. Okay, it's been a very interesting session. आप बाद में देख लेना Kostab. Kostab is one of my oldest followers, you can say. He's there on Unacademy also. So excuse me. So castling is castling नहीं कर पाया विश्वनाथन आनंद. So what did black play here? Well, black played g6. ठीक है. G6 Anand played. He could not castle. That was the main thing. And white, of course, has a slight advantage over here because black is not able to castle yet. But abhi tak it's very slight in this position, and white castled. Okay, black can castle over here, by the way. Black can castle over here. But ye, Anand ne socha ye dark squares are weak, you know. And the bishop is going to come and sit over here. Right, this bishop will come and sit over here. So the dark squares are weak. So Anand was worried about that. So Anand played here. He did not castle, although castling was a playable move. You know, better than what actually happened. Anand played knight b6. That is just retreating to the queen side, and the activity is not much for that knight over there now. You know, it's kind of restricted. The knight is just going to the queen side, whereas we required the knight to be on the king side. It's a king side knight which has gone to the queen side. Please notice that also. And here white plays Gary Kasparov plays c4. Now c4 because here in this position d5 or d6, they both are coming. Yeah. So c4 is played over here to control this vital square d5. Okay, and after this, white is slightly better still. Yes, if you guys like my stream, I can definitely continue with the same topic openings, and so my mind will be made कि आप लोगों को क्या पसंद है. Okay guys, so d6, and after this white is playing here. He has to develop his pieces, right? Of course he has to develop, but here can you guys tell me what interesting move white came out with? White came out with an interesting move over here. Oh, sorry. White came out with an interesting move. Okay, Siddharth, thank you for your interest. What is the move? Yes, Akshay, have you seen this game? So Akash is also right. Rook d1 is the move. It's a very nice move. The rook is spinning the pawn over here. As you can see, this will be putting real pressure on this d6 because of this queen. Okay, great. So यहाँ पे black played knight d7. He's trying to now, you know, take care of this pin. Anand was trying to take care of this pin which was there, which I showed you, and here white comes out with the best move. Now what is the best move white played over here? Yes,
That's right. Bishop h6 because अभी हम नहीं खेलेंगे bishop h6 तो black will do castling. Remember guys. Also pawn takes pawn is not an interesting move at all because bishop takes d6 attacking the queen. So ये तो equal हो गया. This is kind of equal for you know. So ऐसे नहीं खेला. He did not play like this. This will be not such a good move. Okay, going back, this was the position, and yes, Master Blaster, I increased your rating 200 points. Master Blaster likes to pull my leg in my stream, so you're welcome. If there is I am happy if you have any more kind of jokes on me, I would say. So bishop h6 is the move. So by the way, Master Blaster, what's your name? What's your real name? I would like to know the name. So bishop h6 and here white is stopping the castling, of course. So black just grabbed this pawn. Black is grabbing the pawn, and white went with knight x e5, and यहाँ पर in this position, can you guys tell me, Karthik? Okay, Karthik. So in this position, can you guys tell me what white played? White played one more good move. He has to build the pressure. White has to build the pressure. Castling has been stopped. So you guys see here, a lot of things are happening. Black is under tension. His king is stuck in the center of the board. White's pieces are some really good, active piece, like this bishop is there, this rook is there. They are quite active. The queen is also on the king side. So bg7 actually मैंने भी ये सोचा था कि bg7 क्यों नहीं खेला white ने. Actually white did not play bg7. bg7 can be played here, yes, but Gary Kasparov thought here probably because black can play here bf6, okay, and capture, and now after knight c3. This is still not bad because black has this pair of bishop, okay, right? This pair of bishop is quite strong. That's what Gary Kasparov thought. And also the now the position is suddenly not that bad after this. So he did not do bishop g7. Gary must have definitely seen bishop g7. There is no doubt about it. White wants to keep the pressure alive, okay, so white goes here white goes knight c3, right? The last of the minor piece to be developed. Of course that knight was not doing anything over there, okay. So Gary woke up the knight and told it, come on, let's do some work, okay, the war has started. So knight c3, and after this comes f6. Now this black had to move this to create a Luft. Luft is a German word. He wanted to create a opening for his king, a square, okay. So that he wanted to create. So Luft is a German word, L-U-F-T. That's how Lufthansa Airlines has come. Luft is from Luft means air, okay, so Lufthansa. So that's what black creates a Luft kind of for his king. So in this position there came white played c5, okay, and after c5, yes, you can see the pressure mounting on this file, okay. This is really nice. Okay, sorry, d5 nahi hua tha. This is just a mouse slip. So after c5 there came knight f7.
here black is attacking this bishop, but definitely white is going to. Now white did not play here. Yeah, that's right. Actually, white did play here the best move. Can you guys tell me what is the best move? G5 can trap the bishop. Okay. ये अगर black plays G5 तो it's a very bad move, guys, because of bishop H5 check. Okay, bishop H5 check. This is really bad. This is really bad. G5 is bad actually. And for something like knight G6, I can play rook E1, and this is really now the position is gone. Rooftop. The advantage is rooftop. So this didn't happen. G5 is not a playable move. Yes, so white played here the best move, which is Gary Kasparov playing the best move, which is after this cx d6. That's the best move, and black had to definitely capture this. He cannot capture this bishop, of course, because simply here you'll be surprised to know here that after this the game is like almost actually, instead of taking the bishop, you'll be also surprised to know pawn captures pawn is better than pawn takes bishop. Seriously. Because you can see here the queen is trapped. The queen is trapped. Okay, guys? Queen has nowhere to go, as you can see. So I know a lot of people who will take this bishop over here, but like they say, there's a saying in chess, if you have a good move, look for a better move. Okay, so that is just one of the things. This is just one of the things, I mean. So cx d6 is what happened. Black had to capture that pawn, and after this white has to now put his attention back to this bishop. Guys, I've seen in your play, when you capture on the other side, then you forget about this piece which has to be taken care of. Okay, so please remember, if you are doing an intermediate capture, like यहाँ पे white wants to take care of this bishop, but he's doing this in between move. Okay, a capture in between. He's making something else, so which is attacking, and after that is done, a lot of people I've seen, they forget about not people like grandmasters, but ordinary players, they forget about the bishop after just one move. So please be careful. Here white did play, of course, white was Gary Kasparov, the legend. He cannot forget about his bishop dying. So queen e3 is the move. After queen e3, the position is now going slowly. The position, the advantage has been rising, and finally here in this position now, black has 1 second, guys. Yeah, black here played knight to h6. Okay, why can't he play bx d6? Here bx d6. Yes, he can play bx d6 here, but there will come here bb5 check. Okay, bb5 check, bd7, and in this position rook e1 is the best move. Okay, and you can see here the bishop is forced to come on this row, this file. Okay, well, black can play knight e5, but what kind of a position is this? f4 is coming. So this position is really gone. Yeah, bishop e5 is there, but then I am simply pinning the other bishop also. Look at this. This is really nice. Look at this. Okay, Kostav, yes, I'm there on Instagram, but I don't use it much. So going back here, going back. Thank you for the question. It was a good question, Pushpa. I like good questions, so thank you for it. In this position, knight f7 and queen e, pawn takes हो गया. उसके बाद queen e3, knight takes h6, queen takes h6 is what happened, and black played here bf8 and white played here queen e3 check. Here he has to now move the king. Yeah, why? Well, because bishop e7 here is again white is going to play bc4. Look at this.
Look at this. Black is stuck. He's stranded. Black's king is stranded. Okay. Sure. You can rather, guys, you can follow me here on my stream. That'll be my most pleasurable thing. But if you want to follow me on Instagram, of course you can. So here, Queen E3, King F7, and in this position, White played Knight to D5. All right. Bishop to E6 is what happened. That's what Anand played, and after this, White played another attacking move. Guys, what is the attacking move? Knight F4, and he's threatening that bishop twice. Black played Queen E7, and what did White play here? A silent killer move. Yes, I like to call this a silent killer move, guys. So here comes OP, Gary Kasparov, OP. What did he play here in this position? A silent killer move, and Vishwanathan Anand resigned. Hello, Allu Anvit. Hi. All good. Thank you for joining my stream, guys. So what I'm asking you the question, what did White play here? And what was the silent killer move? Yes, sure, Kostab. I will, accept your request. Why can't he play BE7? Okay. Well, this Pushpa, this is attacked. This bishop is attacked. So it's very, we have to save that bishop. So we cannot do, bishop E7. So Queen E7 has come to protect. And in this position, what was the silent killer move? Bishop C4. Bishop C4 से कुछ नहीं होता. Bishop C4 is a blunder. Bishop C4 is a blunder because bishop takes bishop and black is a piece up. So Bishop C4 is wrong, guys. Bishop C4 is wrong. Cost up. Rook C1 someone says, but नहीं, not Rook C1. There is something else. Rook C1 से कुछ नहीं हो रहा. अगर आप दूसरा रुक भी ला रहे हो, this rook also if you're bringing, नहीं, इससे कुछ नहीं होता. In fact, the pressure is gone. यहाँ पे एक बहुत ही important move है which White played, and it's a tough move to find. I'm telling you, it's a tough move to find. Okay, and after that move, Anand just resigned. Yes, Shiva is right. Shiva, have you seen this game? No, not taking the bishop. The move here, guys, you'll be surprised to know what Gary Kasparov played here. He played here rook to E1. Okay, it's such a silent killer move, just getting the rook over here, and black throws in the towel, as they say, which means resign. Now, why did he resign? Why did he resign? What was happening here? What is so great about rook E1? What is so great about rook E1? Yes, suppose for instance black plays rook e8. Okay? It's just a normal move. Rook e8 is adding protection. If white is attacking twice, thrice, he's going to attack third time. Black is also defending thrice, right? All this is defended, right? But इसमें problem ये है कि rook e8 के बाद white can simply play, there is no queen sack here, white can play knight e6, queen e6, and in this position white has a great move, bishop c4. Okay guys, look at this move, and the rook will go, and position is totally lost here for black after bc4. Why can't he play be7 when he played queen e3? Why can't he play be7 when he played queen e3? Okay, queen e3. Oh my god, आप लोग बहुत दूर जा रहे हो. अच्छा, queen e3, ठीक है, bishop e7. Okay, यहाँ पे I already showed bishop c4 is what is happening, and then the pressure will mount. The rook is going to come on e1 and the knight will come on d5. Okay, so bishop e7 is not such a great thing to do over here, and in this position black just resigned. But can you guys tell me here
Anything you want to try something? Anything else after rookie one? Rookie one was the the boom move. I would say it's a silent killer, but the boom move. After that, the position is lost. Okay, guys. So that's what is happening. Well, any questions out here? Why did Anand resign? Questions like that. Why did Anand resign? Well, can you tell me? Can you just be in Vishwanathan Anand's position, which is black? Which is black. I'll give you black's position and try to defend this position. Can you guys try to defend this position even though nothing looks on the surface? Yeah, bishop h6. Yes, black can play bishop h6, but still white is going to play here bc4. Look at this move. Look at this move. What a paralyzing move. What a paralyzing move is this? Okay. So even if bishop takes knight, I'm going to first do bishop takes e6 check, king g7, and I can simply take this also, and this is gone. Okay guys, coming back, white से black, black से white थोड़ा हमको करना पड़ता है. Sorry for the confusion. d5, d5, यहाँ पर d5, यहाँ पर d5. Okay, d5. Well, that is a good move. That is a good move. d5. It stopped my bishop c4 plan. बहुत अच्छे. It's a good try. Who said d5? Master Blaster and Pushpa. Did you guys say d5 in this position or some other position? Okay, so यहाँ पे white can play bf3 and it's still, the position is lost. Look at this. Look at this. 1, 2, 3. Okay, so look at the power. So this is what? Rook a e8. Okay, किसी ने rook a e8 भी कहा है, but this I already showed you. Rook a e8 I already showed you. Knight x e6, queen e6, and bc4. Why can't he play no, this position only? Okay, yeah, all right. So Master Blaster Karthik, we saw that d5, but d5 was a good try, but आपने देखा, you guys saw what happened to d5. There is bf3. So I think we covered all the variations, guys. This is how you analyze a game, and I hope you liked my stream. Bishop h6 here. अरे बाप रे, अभी तक bishop h6 मैंने बता दिया already. Yeah, bishop h6 I already said, Pranjal. Why not knight e6, queen e6, queen c4? Sir, why not knight e6? Kab, when? So many questions, but यहाँ पर you guys have to ask me why not instead of. When you say why not nx c6, you have to say instead of, so I come to know which move you're talking about. Why not, Akash Raj? Why not nx e6 instead of which move? Thank you, Master Blaster. What about king move? अरे बाप रे, कितने ये सवाल तो सवाल ख़त्म ही नहीं हो रहे. Guys, my stream is running. I'm already 15 minutes. I have overstreamed. Okay. Instead of rook e1. Okay, ठीक है, देख लेते हैं. यहाँ पर instead of rook e1, Akash is saying why not knight x e6. Knight x e6 कुछ नहीं होगा ना. Knight x e6, queen e6. Nothing happens. This position is equal now. White lost all the advantage with the knight x e6. Okay. Knight x e6, queen x e6, bc4. I'll just take this. Queen c4. Rook a c1. Okay. You're saying rook a c1. Then bringing another rook into attack for rook c7 instead of rook e1. No, this is wrong, because I'll simply do 3. I'll take this pawn. And what can you do here? Rook c7? Rook c7, right? I'll just go king g8. Guys, the king is safe now. He's just safe. He ran. And Vishwanathan Anand would have been very lucky if Gary would have played like this. Okay, though Vishwanathan Anand is not the type to start dancing. But
he would be definitely dancing in his heart. So ये तो plus हो जाता पूरा. Okay guys. All right guys, I hope you liked my stream. If you want, I'll come back with part 2 of openings and gambits. We can see gambit of your choice, openings of your choice. You are the boss. I will show you what you like to see, because don't want it to be boring. Whatever you don't want to see, we won't see. Okay. Petition to make you a mod, I cannot do it, Karthik, because that's done by Unacademy. I'm teaching here on behalf of Unacademy. So all right, bye bye guys, bye. And let me show you when is my, let me tell you when is my next stream. My next stream is oh, अब थोड़ा दूर है next stream, because I'm on Unacademy for the next 3 sessions. I'm on Unacademy. So my next stream is now on the next Friday only. Okay, that is 23rd Friday is the next stream, guys. So I'm gonna see you next time, Friday रात को 9 बजे. Please do come join me. I hope you like my stream. 9 to 10 Friday on 23rd. Okay guys. Okay, hope you liked it, and please be safe guys. Please wear a mask if you're going out. India is in a very bad shape. We don't want to be number 1 in something something which is really bad. Okay, there are people dying out there. Please wear a mask. Those who are not wearing a mask, they are punishable. There is an offense. This is an offense for not wearing a mask, and there is a fine also by the government. Please do wear a mask when you go out. Good night and take care. See you. Bye.